Well, the Rasagola debate is still on, and here we are back with eISL Season 2. As now the next matchup, why you would be wondering, I'm talking about delicacies over here, is because of the fact that we've got Odisha FC taking on ATK Mohun Bagan. Now, Odisha and West Bengal, there's been that tiff over their dishes, and well, has been resolved outside, but I pretty much still feel it's out there. And now, of course, TT, welcome. You're not really a big fan of ATK Mohun Bagan, but tell me something about what you're looking forward to in this game. इस गेम के अंदर तो पहली बात तो देखना है कि एटीके मोहन बगान का टीम परफॉर्म किस तरीके से कर रहा है स्पेशली एंड सेम विद उड़ीसा एसी एज वेल, क्योंकि उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो उनके जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से अपने आप को शो कर पाते हैं eISL सीजन 2 के अंदर, वो तो देखना होगा. बट एटीके मोहन बगान की अगर बात किया जाए, जैसे कि मैं पहले भी कहा था कि ईस्ट बंगाल फैन एटीके मोहन बगान के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत रहता है. तो आज देखेंगे कि वो परफॉर्म कैसे करते हैं, क्योंकि कल के दिन पे ड्रॉ हुआ था ईस्ट बंगाल एफसी का. सो अगर आज एटीके मोहन बगान जीत के जाते हैं तो उनको एक लीड मिलेगा 5 लेवल के ऊपर. बट जोक्स अपार्ट, लाइक मैं चाहूंगा कि सब लोग अपना बेस्ट फॉर्म करें एंड वो इधर से पॉइंट्स लेके ही जाए. I mean, I'm pretty sure. Well, before we talk any further, let's just take a quick look at the matchups over here and figure out who's going up against who. Because Odisha FC coming in with two completely new players inside the eISL. But when we're talking about ATK Mohun Bagan, you've got Vicky and Afnan. Now, Vicky, well, I have seen him in different tournaments, but in eISL, this is going to be his first time. A veteran player, nonetheless, teaming up with Afnan, who's sort of had been the star of last season's eISL. I mean, a really nervy start for this wonder kid, and eventually, once he got his, nerves calm, and then we could see him really in a really good scintillating flow, creating such beautiful plays, and him outshining everybody else. So at this point, you've got Vagya and 8 Nates, or rather, a lot of people from the community just call him Nate, going up against, the players of ATK Mohun Bagan. And I'm pretty sure, the ATK Mohun Bagan fans would be just wondering, why isn't East Bengal FC supporters there on the destination? But we'll ensure that, he's going to be keeping himself in check over there. And also, we love all these 4 players, right? बिल्कुल. एंड देखिएगा जितने भी प्लेयर्स हैं सबको हम लोग जानते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे eISL सीजन 2 की बात है, पहला मैच है इन दोनों ही टीम्स के लिए. एंड बात करते करते फर्स्ट गेम हो चुका है शुरू. एंड शुरुआत पे ही हम लोग को ओडिशा एफसी की तरफ से यूजुअली बॉल कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं. एंड ये ज़रूरत भी है कि आप रखो बॉल, बट बहुत ही जल्दी अटैक पे आगे बढ़ने की कोशिश था. बट एटीके मोहन बगान के डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग इधर देखने के लिए मिले. बॉल छीना गया एंड काउंटर पे जाने की कोशिश. Yeah, absolutely. Now we've got Vakya against Vicky. Vicky, we have seen him on numerous occasions. I mean, multiple tournaments I've casted him. It was like way back, 3 years before. But right now, he shows that killer intent. And now with Bellingham looking for that one good pass, could have come in through with Ronaldinho just trying to juggle the ball through the defenders and still keeping that possession on. Really strong, goes in for that shot. And what a finish for Vicky. What a start for ATK Mohun Bagan. Because last year, I must say, the fans of ATK Mohun Bagan were in pain, were in distress, ended up last in the eISL. But with this start, they would be really happy, brimming with joy. फॉर श्योर. जिस तरीके का शुरुआत इधर देखने के लिए मिला, काफ़ी अच्छा. एंड हम देख पा रहे हैं मेसी को थोड़ा इधर ड्रॉप डाउन करा के खिलाया जा रहा है फॉर क्रिएशन में भी. एंड देखिए एक बार फिर से मेसी, मौका मिला. वैन डे सार बेहतरीन सेव इधर करते हुए. बट एटीके मोहन बगान जो शुरुआत उनको मिला है, ये शुरुआत मुझे लगता है कि धीरे करके और भी ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन पे ही उनको लेके जाएंगे. लेकिन ओडिशा एफसी उतने इजीली नहीं छोड़ने वाले इस पूरे सिचुएशन को. इसके पहले एक गोल आ सकता था, बट वैन डे सार के ब्रिलियंस की वजह से
ये अभी भी 1-0 के ही स्कोर लाइन पे देखने के लिए मिल रहा है, बट एटीके मोहन बगान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका अटैक आया था आउट ऑफ नोवेयर, जिस तरीके Is से this an पास निकाला offside? गया था वो काफी अच्छा। या Oh, oh God. I mean, the run was made a little too early over there, right? And for now, I think I'm loving this kind of FIFA because the one we saw earlier was a very technical one. This is an end-to-end one. Of course, we've seen how good Vicky was with that composure he had, and with Messi, Bhakia wanted to change a few things here and there, but just could not get past through the sturdy figure of Virgil van Dijk, and we know why. He's one of the best defenders in this edition of FIFA. And one thing for sure, we are seeing, Vicky trying a plethora of things, right? We've seen him going for those direct passes, being very calm. And then there are those instances when he's going for those driven through passes. So he's got a lot of attacking stats in his arsenal. Let's see if he can score one more. फिर से कोशिश था कि वो इधर से एक ड्रिवन थ्रो के साथ मेसी को बॉल दे, बट आप इधर देख सकते हैं कि एटीके मोहन बगान एंड ओडिशा एफसी दोनों के दोनों ही अपने जो विंग्स है उसको उतना सारा यूज अभी तक नहीं किया है। वो सेंट्रली खेलते हुए दिख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा थ्रू बॉल लॉब पासेस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी दिखाते हुए, बट इस बार बॉल छीना जाएगा मेसी की तरफ से, लेकिन उसी टाइम पे फिर से एक बार बॉल जीतते हुए ओडिशा एफसी वियरा को इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है टीम में। एंड वियरा वी नो सेंट्रल मिडफील्ड पे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करते हैं, बट वैन डाइक ऑल द टाइम, हर टाइम जब भी उनके डिफेंस के ऊपर, उनके गोल के ऊपर खतरा आता है, वर्जिल वैन डाइक होते हैं द सेवियर, बार बार सेव करते जाते हैं, इंटरसेप्शन दिखाते हैं। Yeah, of course, no doubt. And ATK Mohun Bagan, their fans must be so delighted today because finally they're seeing their team go up. And we could, of course, we are missing Bindritej, one of the attacking stars of ATK Mohun Bagan, and AP Dillon is also not here. But right now, wait, that little. Oh, okay. हो गया। आई थिंक वो भी सोच रहे होंगे व्हाई विथ मी, क्योंकि इतने सारे मौके बने थे, बट प्रॉपर कंट्रोल एक भी बार हम लोगों को नहीं दिखा था, क्योंकि प्रॉपर कंट्रोल में अगर एक भी बार आ जाते शायद ये हो सकता था खत्म विद गोल। बट देखिए इट्स अ पेनल्टी, रेड कार्ड, वैन डाइक को रेड कार्ड मिला है। Bhagya can't believe that. I don't think this deserved a red. Oh God, Titi. ये नहीं होना। Finish with the goal. ATK Mohan with the second. And इधर ओडिशा एफसी, उनके पास और ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि वैन डाइक अब वैन डाइक से अच्छा और किसको लेके आ सकते हैं डिफेंस के अंदर। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऑप्शंस उनके पास है, बट फिर मुझे लगता है कि मिडफील्ड से या फिर अटैक से किसी को हटा के कोई एक सेंटर बैक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जरूरी है, क्योंकि डिफेंस आपका अगर स्ट्रांग रहेगा फिर ही जाके आप अटैक पे कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ ज्यादा चांस बनता नहीं है। एंड देखिए इधर एटीके मोहन बगान बहुत अच्छे तरीके से, ये जो एक पास था बेलिंगम बहुत ही ज्यादा हम लोग को असिस्ट इधर प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं इस सीजन के अंदर, अगर हम लोग कल से बात करें तो। Yeah, definitely. No second thoughts about that. And has been involved both in the attack and the defense also. The work rate is really high. But at this point, I really want to see what are the changes that have been brought in at this point. Oh, there you go. Messi being substituted and Maldini being brought up. I really thought that could have gone for maybe even Eder Militao. But maybe because of the chemistry reasons, a beautiful pass and a shot. Whoa. And there you go. Bhagya strikes back and does have those vengeful eyes. Clearly did not like the way he got that red card on Van Dijk. I mean, it was definitely a pen, but a red card offense, that was maybe a little too strict. Yeah, I was thought कि वो एक येलो कार्ड जरूर हो सकता है, बट रेड कार्ड ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट देखिए एक और पास, लेकिन उसी टाइम पे लूसियो मौजूद थे जिसके थ्रू इस बार के लिए तो बच चुके हैं। लीड की तरफ से एक थ्रू बॉल खिलाने की कोशिश था,
बट वो इंटरसेप्ट होता हुआ दिखा। थियो हर्नांडेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड अभी के लिए मौका बना रहे थे एम्बापे, रोनाल्डो टू रोनाल्डिनियो Oh, एंड एंड अप गोल 3-1। एटीके मोहन बगान, उनके ऊपर कोई भी स्ट्रेस ही नहीं है। आई थिंक वो लग रहा है कि स्मूथली आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड एक-एक करके वो गोल्स भी दागते जा रहे हैं। तो वगैया को ज़रूरत है थोड़ा-सा स्लो डाउन करने के लिए, ज़रूरत होगा। उनको थोड़ा स्लो डाउन करना होगा गेम को एंड देन वो आगे कुछ कर सकते हैं। नहीं तो बहुत टफ हो रहा है उनके लिए। yeah, it is of course going to be difficult playing as a 10-man unit for Vagia, but still he managed to score a goal somehow, and he's got to do that on two more occasions at the very least if he needs to save the day over here with Ronaldinho trying to make in that run, but did not have a lot of passing options over there, and eventually will end up as a corner. A short one being taken, still the position retained by Vagia, but just given away by an offside. Vagia surely feels robbed tonight. फॉर श्योर एंड आखिरी आखिरी मोमेंट पे देखिए वर्जिल वैन डाइक बहुत इंपॉर्टेंट एक पिलर है आपके डिफेंस के अंदर एंड उनको अगर शुरुआती 20 मिनट के अंदर सेंट ऑफ किया जाता है विद रेड कार्ड, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बिग थ्रेट हो जाता है एंड वही चीज़ इधर देखने के लिए मिलता हुआ। बाय द वे पेनल्टी तो था, शायद एक गलत टाइमिंग के ऊपर टैकल किया गया था, दैट्स वाई उधर जो है पैर लग गया था, बॉल पे नहीं लगा, दैट्स वाई पेनल्टी था। बट येलो कार्ड आई थिंक वो हो सकता था, बट रेड कार्ड इट्स टू हार्श ऑन देम। बट अभी देखिए जिस तरीके से लाइक पहला गोल दागा गया था इधर ओडिशा एफसी की तरफ से, रूडोलित उनके जो शॉट्स है, उनके जो पोजीशनिंग्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट इस जगह पे जिस तरीके से उन्होंने ट्रांजिट किया एम्बापे टू रोनाल्डो टू रोनाल्डिनियो, इस पे पूरा ही कंफ्यूज हो गए थे ओडिशा एफसी के डिफेंस एंड 3-1 हो गया उसी सिचुएशन में। Well, at this point, it's gonna be really, depressing for the Juggernauts, because Vicky is just gonna constantly put on this threat again, going in for that shot. An attempt taken and saved somehow, but again, ATK Mohun Bagan, they will be on the attack. A short corner for them, passed on towards Ronaldo, and now he just wants to dribble past the players. But being a little bit more patient, I think Vicky knows he's got it everything chalked out for him, right? He knows exactly what to do. He knows that he's got that extra man advantage. Could utilize that in his favor, because he also knows that Bhagia's offense has been weakened a little bit, and will have to rely heavily on those counter attacks maybe. And now will have one less passing option, and Vicky can really capitalize on that. And of course, the departure of Virgil van Dijk will definitely be hurting. I mean, no doubt that Maldini is also really good defender, but the presence of Virgil van Dijk in your defensive half is so instrumental in the success of your team, in trying to keep everything going afloat. And that is going to be evident in just the next couple of minutes. लेफ्ट विंग एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फिलहाल के लिए थियो हर्नांडेज के साथ। एम्बापे टू हुलीत, बट देखिए प्रेशर ऑन एंड इस बार उड़ीसा एफसी बॉल छीनने में तो कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन अटैक में ट्रांजिट करने का उतना मौका उनको दिया नहीं जा रहा। राइट विंग पे हकीमी वंस अगेन टुवर्ड्स हुलीत से एक पास एंड ये गोल हो सकता है, लेकिन आई थिंक वो पहले से मन बना लिए थे कि उनको शॉट लेना है, बट थोड़ा और हम कर सकते थे। इस बार के लिए देखे काउंटर पे जाते हुए एटीके मोहन बगान, बट नहीं इधर ग्राउंडेड पास आई थिंक और बेहतर हो सकता था अगर उनको आगे जाना था। Yeah, I think could have kept a little bit more composure over there in that situation. No doubt about that. But for now, it's a 3-1 scoreline favoring ATK Mohun Bagan, and they're going to be really happy. Vicky has certainly been the better player. Vakya, like I said, must be just fuming at this point. Really needs to collect himself back. Did manage to get that one goal, but after that has been really been the one constantly trying to No defend. way. And there you go, a little tap in, and not difficult at all, as ATK Mohun Bagan
It's a nightmare for Odisha FC at this point, and Vakya just wants it to pass. And with team of the year icon Ronaldinho is dancing all the way and अभी के लिए देखा जाए पूरे ग्राउंड के अंदर वो सिर्फ डांस कर रही है बॉल के साथ एंड सिर्फ डांस कर ही नहीं रहे उनके ओपोनेंट डिफेंडर को भी डांस करवा रहे हैं जिस तरीके के स्किल्स इधर वो दिखाते हुए बट एज ऑफ नाउ कोशिश था कि एक क्रॉस किया जाए एकदम मिडिल पे बट वो जरूर डिफेक्ट हुआ बट फिर बॉल अभी एटीके मोहन बगान के पास ही लियोनेल मेसी इधर कोशिश था बीचों बीच से निकलने की लेकिन उसी टाइम पे थियो हर्नांडेज एक जस्ट टच एंड बॉल छीना गया बट इस बार पहले से ले लिया गया है बॉल उलीद से मेसी बट पास उतना खास नहीं हुआ. Yeah, I think he forgot to trigger the run on R9 right over there because he had synchronized everything else perfectly right. Had R9 got a little bit ahead, maybe expected a little too much from the AI, and we know how bad the AI is in FIFA 23. There have been so many instances where TT, you and I, when we've been playing against each other, we've been complaining, where's the run? And then we realize, oh, shoot, we have to actually press L1 for that to happen. But regardless now, I mean, this is pretty much clear, right? There's nothing out of ordinary. It's Vicky just constantly applying that pressure. And Vakya has been thwarted back on the back foot as another goal gets netted in beautiful composure. And yes, even TT is surprised and happy at the same time because it is his favorite player, Lionel Messi, scoring that one. And it is already lights out for Odisha FC at this point. 5-1 being the scoreline. It's very humiliating for Odisha FC. शुरुआत उतना खास हुआ नहीं उनके तरफ से बट एटीके मोहन बगान हो क्या शानदार डोमिनेट करते हुए इधर एंड प्रॉपरली लग रहा है इधर विकी उनको पता है वो इंडिविजुअल प्लेयर को काफी ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली वो पासिंग गेम जो है वो तो खेल रहे हैं ऑब्वियसली लेकिन कुछ कुछ मोमेंट पे वो बॉल होल्ड करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जिसके बाद वो एक्स्ट्रा टाइम उनको देके जा रहे हैं जिसके थ्रू क्लियरली इधर गैप्स क्रिएट होते हुए दिख रहे थे डिफेंस के अंदर ओडिशा एफसी की तरफ से सो एटीके मोहन बगान शुरुआत बहुत शानदार एज यू सेड कि पिछले सीजन पे उतना खास नहीं था परफॉर्मेंस एटीके मोहन बगान की तरफ से बट इस बार का शुरुआत आई थिंक उनका ये ड्रीम स्टार्ट हो सकता है इस पूरे सीजन का. Oh yeah, I think they couldn't be more happier than this. There's no doubt about that. The way they've been playing, and right now again, this time Vakya. Oh! What on earth was that? Talk about a really ridiculous save. I mean, the stars are definitely not aligned for Vakya. I mean, at this point, he would just want this misery to end. Such a beautiful effort of being made over there, despite having one less man on his attack. He went in through and, just to be stopped like that. Unfair. Yeah. Unlucky. कहीं न कहीं हम लोग को देखने के लिए मिला हो गया बट या ये चीज़ तो कहना होगा कि अगर आपके शुरुआती पे एक प्लेयर डाउन हो जाए वो भी और वेंडाइक जैसे आके डिफेंस से अगर हट जाए फिर उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल के बाहर तो जाता ही जाता है एंड उसका प्रॉपर फायदा उठाना भी चाहिए था जो कि अभी उठाते हुए दिख भी रहे हैं एटीके मोहन बगान के तरफ से विकी बट वेरा को हम लोग उतना ज़्यादा देखे नहीं है इस सीजन के अंदर आज यूज किया जा रहा है विकी की तरफ से एंड विकी इधर मेसी को भी बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बात करें ड्रॉप डाउन खिला रहे हैं जिसके थ्रू मिडफील्ड के ऊपर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है सो सब मिला के अभी के लिए एटीके मोहन बगान के जितने भी बॉक्सेस थे वो सब कुछ टिक्ड है एंड दैट्स व्हाई इनका जो आउटकम है वो जो सोच के आए थे ऐसा ही होता हुआ एंड मे बी बेटर देन दैट. I mean, at that place, I really felt that that could have gone in. Neymar being a little bit late, but this time a promising chance for Vakya. But it's a Virgil van Dijk from ATK Mohun Bagan, just thwarting the ball out of play. And ATK Mohun Bagan, their fans absolutely rejoicing and happy about the outcome and happy about how things have begun for them during this particular eISL because right now, I mean, Vicky was just too good and
really disappointed, disheartened. And I would have liked to see a glimpses of that pen again to check once more if that was really a red card offense. I mean, was of course the last man and went in for that tackle there, but still, I really felt that was so unfair for Vagya. या आई थिंक ये गेम शुरुआत से ही उनके लिए अनफेयर रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि उधर वर्जिल वैन डाइक के ऊपर रेड कार्ड आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हार्ड डिसीजन, थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन हो गया था फ्रॉम रेफरी। बट उसके बाद जो वो सेव आया था वैंडिसार की तरफ से उसके बाद तो हम लोगों को पूरा क्लियर होता हुआ दिखा था कि यस, ये गेम तो एटीके मोहन बगान के लिए ही है। एंड नथिंग मच, बट उस एरिया पे अगर देखा जाए एटीके मोहन बगान जिस तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे हर एक बॉल को, वो कन्वर्जन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड ये शॉट, ये गोल मैं ऑब्वियसली याद रखने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं कि मेसी मेरा फेवरेट प्लेयर है, इसके लिए भी जिस तरीके से टर्न किया उन्होंने एंड टर्न करके एक प्लेयर को बीट किया। पीछे और भी डिफेंसिव प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन राइट साइड से कर्ल हुआ, वो भी राइट फुटर के साथ जो कि वीक फुट है मेसी का, एंड उसके थ्रू इधर गोल जाता हुआ दिखा। बट फर्स्ट मैच इस सीरीज की अगर बात किया जाए तो 5-1 से खत्म हुआ है। विकी एटीके मोहन बगान को 4 गोल का जो एक गैप है, जो लीड है, वो इधर दिलाते हुए दिखे। सो लाइक बहुत बहुत ज्यादा शानदार। सो अभी कोप मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओडिशा एफसी के लिए कि उनको अगर कॉन्फिडेंस भी वापस लेके आना है तो इस गेम के अंदर जीतना होगा। Yeah, there is no two ways about Odisha FC, and Vagya still knows, after that dementing loss, somehow, he has to just get himself back, collect the pieces, and needs to coordinate with Nate and win the second game. That is the co-op matchup, and Afnan will be making a comeback over here, and first time it's going to be such a delight to see him in the green and red. But of course, the FC Goa fans would be missing him. Played through the qualifier, has become a part of ATK Mohun Bagan this time. But again, talking about what just happened in the previous matchup, Vicky initially was also looking really solid. He was creating a lot of those chances. You could see majority of those plays coming out of a lot of those through balls, those driven through passes, and every single time, more often than not, he was able to receive it, and it's easier said than done, to be honest. It's a driven through pass, but every time you need to synchronize your run, and you have to ensure that your timing is perfect, and Vicky sort of had mastered that, and did receive a lot of success even on that second attempt, the one that came through penalty. He had also made that through run and had succeeded in getting that, but then the red card comes in and everything sort of changes for Vakya. Though despite conceding 2 goals and missing out on one of his players, still went on to score with Ruud Gullit. But after that, second half, was clearly one-sided. It was just Vicky having that extra edge that that's needed, and especially when you are playing in a professional matchup and you've got both the professional athletes competing against each other. TT, how much important the absence of one man can cause to your team, and that was absolutely terrifying for Odisha FC there. For sure, and अगर वो प्लेयर आपके डिफेंस से हो तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि आपका डिफेंस फिर उतना स्ट्रांग नहीं रहता जितना आप शुरुआत करते हैं, जिसके साथ आप हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर एक प्लेयर को आप हटा सकते हैं अटैक से, लेकिन फिर भी आपके फर्स्ट चॉइस डिफेंडर उधर नहीं रहते। तो वो चीज़ क्लियरली इधर डिफेंस डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता हुआ दिखा एटीके मोहन बगान एंड इधर ओडिशा एफसी के बीच में। बट एक चीज जो कि इधर बात करना ही होगा वह है एटीके मोहन बगान की तरफ से उनके ब्रिलियंस। हालांकि वो रेड कार्ड था, लेकिन रेड कार्ड छोड़ के भी एटीके मोहन बगान बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किए थे, एंड वही चीज शायद एक बार फिर से हम लोग को दिख सकता है अगर हम लोगों को विकी एंड अफनान के बीच में कोऑर्डिनेशन वैसा ही देखने के लिए मिले जैसे वो सोच रहे हैं। I mean, that's going to be absolutely crucial over here. There's no doubt about that. Because at this point, TT, let's be honest. Now, Odisha FC, they're looking really strong with their attack. Both Bhagya and Nate, they've got to try and dig in deep if they have to beat Vicky and Afnan. And Afnan looks quite different.
than what he used to look in the season one, and felt I could not recognize him for a moment. But clearly now they are on their attack, right through the wing, attacking, and will have to resort for that little bit of a pass, or maybe just intercepted. Yeah. Van der Sar on the ball, and Van der Sar उनके पास सब कुछ है इस गोलकीपर के पास ऑन द बॉल एबिलिटी, फिर पासेस, स्पीड, सब कुछ कहीं कि मौजूद है, एंड आई थिंक इसी वजह से इतना ज़्यादा यूज़ भी होता है. बट इस बार देखिए अटैक पे जाते हुए धीरे धीरे करके ओडिशा एफसी एंड वैन डाइक फाइनली एक बार फिर से अपने टीम को बचाते हुए. बट इस बार कोशिश यही होगा ओडिशा एफसी की तरफ से कि वो कोई भी रेड कार्ड ना कंसीड कर ले. एंड रोनाल्डिनियो मिडफील्ड के ऊपर फुल्ली ढूंढ रहे थे पासिंग ऑप्शंस. मेसी एंड एक पास इधर रोनाल्डो के पास जा सकता है या फिर रोनाल्डिनियो. कोशिश था कि बीच में से निकल जाए, लेकिन वो खाली एरिया या फिर जो मौका वो ढूंढ रहे थे वो मिला नहीं. Yeah, just did not get that lane. And now ATK Mohun Bagan will have to settle with a cross. Finally, when we can see one being delivered through, to be honest, no, but decides to go for a short one again. So none of these players are taking their chances with those corner kicks, but a little bit of a good ball roll coming in. And I felt the keeper could have done a better job on holding on to that, and Odisha FC being really fast with just putting the ball out of the play. Throw in मेसी to हुलीद से पास ओडिशा, बट फिर से बॉल छीना गया रोनाल्डो की तरफ से. बट थियो हर्नांडेज, टीम ऑफ द ईयर थियो हर्नांडेज बहुत शानदार प्लेयर है, एंड वो बार बार अपने डिफेंसिव ब्रिलियंस एंड अटैक पे भी प्रेजेंस के साथ ये चीज़ तो याद दिलाते ही है कि इससे शायद इससे बेहतर हम लोगों को लिफ्ट बैक मे बी FIFA 23 के अंदर ना देखने के लिए मिले. बट डिफेंस पे माल्टिनी बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करते हुए. बट बेलिंगम वो एक शॉट लेने की कोशिश था, बट फिर बाद में फेक किया गया. नहीं तो वो हम लोग को एक बहुत देर के बाद लॉन्ग शॉट दिख सकता था. बीच में पास, मौका भी है, क्या ये गोल होगा? What? नहीं, Offside. But it's fine, Odisha FC, they are showing signs of attack, right? They've been pressing in, they've been getting through their defense, and a second attempt being made by these lads. But at this point, ATK Mohun Bagan really have to get themselves back in. Vicky and Afnan have to also see their options, how good they can be. And so far, ATK Mohun Bagan, they've been that center back position over there. That long legs really helps you getting in that reach, and then even when you've got players like R9, Mbappe just trying to pierce in through your defense, Virgil van Dijk can catch them in a blink of an eye. एंड एक बार फिर से थ्रू बॉल खिलाने की कोशिश था टुवर्ड्स एम्बापे, बट हकीमी उनके रियल लाइफ दोस्त उनसे ही बॉल छीनते हुए बाय द वे. बट इधर देख सकते हैं कि राइट साइड से मौका बनाने की कोशिश था थियो हर्नांडेज एज ऑफ नाउ. एंड उड़ीसा एफसी की अगर बात किया जाए, पिछले मैच पे इतना ज़्यादा वो विंग को इस्तेमाल करते हुए नहीं दिख रहे थे जितना इस बार यूज़ कर रहे हैं. एंड सेम विद एटीके मोहन बगान एज वेल. एटीके मोहन बगान जब ये कोऑप की बारी आ जाता है तो वो सेकंड प्लेयर उनके थॉट्स, एंड देखिए ओहो इधर एक ग्लोरियस गोल देखने के लिए मिल सकता था, बट सही टाइम पे एंट्री हुआ वैन डे सार का. दैट्स व्हाई स्कोर लाइन अभी भी 0-0. Yeah, and that's gonna hurt them a little bit. And right now, a beautiful through pass, and Messi, he needs to somehow keep it on, and did keep it alive, passed it on towards Mbappe, who did take that shot. But Odisha FC, I think Lady Luck has not kissed them tonight, because everything that they're trying is not going through. And that was such a beautiful, well-coordinated play, undoubtedly from Vagya and Nate, but did not, or rather could not see it through.
मौका, मेसी, रोनाल्डिनियो, one more time, Lionel Messi with the magic, Mickey and Afnan with the magic, ATK मोहन बगान एक बार फिर से लीड पे। और देखिए, मेसी मैजिक ऐसे ही नहीं कहते, उस उन पे कुछ बात है। और उसी के साथ जब उसी जगह पे विकी एंड अफनान का हाथ आ जाता है विद रिमोट, वो और भी ज़्यादा मैजिकल लगता है। एंड एटीके मोहन बगान के फैंस के लिए तो ये मैजिकल मोमेंट था, बट ओडिशा एफसी उनके लिए नाइटमेयर से कुछ कम नहीं था ये। Yeah, I think no second thoughts about that, to be honest, at this point, right? Because in that moment, that the TOTY Messi card, and you know how good the dribbling is already on the gold card. So what do you Yeah. expect on the TOTY one? And I really loved the way he just R1 dribbled over there and tried to create that opening, and once got it. No doubt that Messi would score from that angle, and especially such an amazing card of that stature. And ATK Mohun Bagan finally find an opening and seize that opportunity, as a result of which now they are 1-0 up ahead. And Odisha FC, there have been those close tight chances. They had been looking threatening a little bit from the, but towards that end of the first half, one little bit of a defensive lapse, and they have been punished. And this could go on to haunt them if they do not come back with an equalizer soon. एंड अगर अभी बात करते हैं मेसी के प्राइस की मार्केट के ऊपर, तो 7 मिलियन कार्ड का जो है वो टच हो चुका है। एंड उसी जगह पे बहुत ही कम जो प्लेयर्स लाइक कार्ड्स है वो भी मौजूद है। एंड इसी वजह से है क्योंकि कुछ अलग लेवल का ब्रिलियंस इस कार्ड के साथ आप करके दिखा सकते हो। एंड इस लेवल के ऊपर जिधर eISL सीजन 2 पे आप खेल रहे हैं, उस जगह पे ऐसे ब्रिलियंस की ज़रूरत होता है। बहुत देर से 0-0 चल रहा था, बट फाइनली विद द गोल इधर एटीके मोहन बगान पिछले मैच को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। एक और विन के साथ इधर जाने की कोशिश उनकी तरफ से हो रहा है, बट ओडिशा एफसी एक गलत मूव कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें, बेलिंगम वर्सेस बेलिंगम चल रहा था, बट ओडिशा एफसी के बेलिंगम साइड से निकल गए थे जिधर उनको टैकल करना था, तो ये उनके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, बट अभी के लिए नहीं। खतरा टल चुका है, बॉल कंट्रोल फिर से एक बार आ चुका है ओडिशा एफसी के पास। Oh yeah, and they would want to capitalize or rather seize on the opportunity, but ATK Mohun Bagan will not let that happen. A beautiful through pass once again, and now looking for a cutback, went in for the ball roll and have been intercepted. And this time, very nice defending coming in from Odisha FC. They need to try something new. They need to explore their options, because ATK Mohun Bagan have been keeping things simple, and simple is what they need at this point, and that has really worked. This, as long as it's not nothing needs to be fixed, it's all right. Just carry on, go with your strat, and again through that left wing with Mbappe just triples through or not, as again Odisha FC have managed to keep them at bay. ओडिशा एफसी दे नीड सम चेंजेस आई थिंक, क्योंकि अभी तक तो कोई भी वैसा मौका वो बना नहीं पाए इस गेम के अंदर, और जो भी मौके बने थे वो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था, उतना ज़्यादा थ्रेटन नहीं कर पाए एटीके मोहन बगान के डिफेंस को और उनके गोलकीपर को भी। लीड टू बेलिंगम, बट बेलिंगम वर्सेस बेलिंगम देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि दोनों ही बेलिंगम एक दूसरे के आमने सामने हर एक टाइम जब भी आ रहे हैं तब कुछ अलग निकल के जा रहे हैं, और वो एट द एंड ऑफ द डे इधर एटीके मोहन बगान के ही बेलिंगम जीतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हैं एक जर्मन क्रॉस कोशिश किया गया था, लेकिन वो प्रॉपर पोजीशन पे जाकर डिप नहीं हुआ, दैट्स व्हाई एक हेडर आता हुआ, एंड फिर से बॉल कंट्रोल आ चुका है एटीके मोहन बगान के पास। Oh yeah, and now I think at this point, well, whatever Odisha FC are trying to do, I like it, because now they are trying different options, right? They're not hesitating. They, like you said, they went in for that German cross over there, and Ruud Gullit was present, and Ruud Gullit from Odisha FC had also made the run over there, nonetheless, right? And two tall players, of course, one had to receive it, and
the attack was foiled, but a little bit of a display of that goal. You can see, that little bit of a roulette coming in, and then in that moment, beautiful R1 dribbling from Messi, just going in through and then taking the shot and completely dealing with the threat. As a result of which, ATK Mohun Bagan, they have managed to get that little bit of a lead. But the second half has been all about opportunities where both these teams are trying to be a little more crafty, with Odisha FC trying to play a little bit more, from the long passes, and now also trying to go with those through passes, something that ATK Mohun Bagan has been constantly doing, which has been working in their favor. एंड इन टर्म्स ऑफ स्टैट की अगर बात किया जाए फिलहाल के लिए तो 3 शॉट्स लिया गया था इसी ओडिशा एफसी की तरफ से एंड 3 में से एक ही शॉट सिर्फ और सिर्फ शॉट ऑन टारगेट देखने के लिए मिला. देखिए पास निकालने की कोशिश था जो कि डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा. काउंटर पे जा सके रोनाल्डिनियो तो लीड पास, लेकिन बीच में से ब्लॉक आता हुआ. मेसी रन निकाल चुके हैं पहले एंड पहले कार्ड आई थिंक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है इस पूरे फीफा 23 के अंदर विथ 99 रेटिंग. बट अभी तक पहले से उतने गोल्स देखने के लिए मिले नहीं है सीजन 2 के अंदर. एंड इसके पीछे एक और कारण हो सकता है, शायद मिडफील्ड के ऊपर ज़्यादा ऑपरेट किया जा रहा है पहले को. ये कारण हो सकता है जिसके थ्रू उतना ज़्यादा गोल अभी भी पहले की तरफ से नहीं आया है. बट हुलीत एंड बेलिंगम दोनों राज करते हुए इधर लाइक मिडफील्ड के ऊपर. एंड कोशिश तो यही रहेगा कि वो फीड कर पाए अपने अटैकर्स को एंड ओडिशा एफसी एक गोल एटलीस्ट इधर दाग के जाए, क्योंकि अगर इधर भी वो हार जाते हैं फिर ये सीरीज हम लोग को इस मैच के अंदर ही खत्म होता हुआ दिख सकता है. Oh yeah, that could be the possibility over here, no doubt. But right now, at this point, it's very difficult to say if Odisha FC can manage to find a counter attack or maybe an opportunity. As now, I mean, that synergy has clearly not been there, but this could be an opportunity that needs to get capitalized. Made the right moves initially, but when he took the shot, Virgil van Dijk from ATK Mohun Bagan was present to intercept, and now again the ball has been stolen. Now this is a golden chance, but Mbappe going on the retreat, trying to figure out a way to pass with Bellingham back towards Ronaldo, and again defended. Well done by Maldini, as now ATK Mohun Bagan did have a chance for a counter attack, but now it seems like the Odisha FC defenders have come in through. ओडिशा एफसी अभी के लिए लास्ट मौका हो सकता है. What a shot from Ronaldo, left on the top, and उसी के साथ 1-1 like fixes. What do you think? Like इसको क्या ही कह सकते हैं, क्या प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर क्रॉस एंड उसी के साथ प्रॉपर पावर. एंड वैंडे सार जस्ट उनके पास और कोई मौका नहीं था. What on earth was that volley? I mean, I really can't believe myself that Odisha FC have pulled that one off. I mean, I just thought that this match was done and dusted, and suddenly it's been brought back to life. And Odisha FC have found a way out, managing to somehow, equalize at the 81st minute with just barely 2 minutes of in-game time remaining. Now can Odisha FC do the unthinkable over here? Can they go in for the winner? They've been playing a lot of those long balls, and that seems to have been working heavily in their favor so far. But the final attack for Odisha FC, they find themselves completely out in the open, and they take that shot, and somehow they've turned the tables around. A little bit of an overpass, but does not matter because too easy for Ronaldinho at that point. And finally, Vagya seems to have been served justice for what had happened to him in that individual game. Odisha FC have seen it through in the co-op, now still remaining alive in this matchup. Wow, what a turn of events today, TT. बिल्कुल जिधर ओडिशा सी पहले गेम पे देख के लग रहा था कि शायद वो इधर ड्रॉ के लिए खेलेंगे, बट नाउ सिचुएशन चेंज्ड एंड इधर वो जीतने के लिए भी खेल सकते हैं.
क्योंकि वो इस कोऑप मैच को जीत चुके हैं 2-1 के साथ। बहुत सारे इवेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिले इस सिचुएशन में। इस गेम के अंदर बहुत सारे टाइम ऐसे लगा कि एटीके मोहन बगान जस्ट पूरे गेम का कंट्रोल रखे हुए है, बट आखिर के कुछ मिनट्स पे 18 मिनट्स कोई भी गोल नहीं आया था ओडिशा एफसी की तरफ से। एंड उसके बाद मानो कि कुछ मैजिक होता हुआ दिखा। पहला वॉली, वाह क्या शानदार फिनिश, बट उसके बाद का गोल आई थिंक वो और भी ज्यादा मजेदार था। Yeah, and you've somehow got to cost the defense because they were kind of left baffled, right? And you can't even blame there because at this point, when you were wondering that he's gonna take the shot, at the last moment he kind of saw that run coming in from Ronaldinho over there, and that was a very well synergized play. And somehow, Bhagya and Nate managed to pull this one through, and I loved it what happened in those final 10 minutes of the game. I really was wondering that what has happened to this game. But let's just break it down. Initially we saw ATK Mohun Bagan making a lot of those through passes, and they were building up plays. They were not hesitating from the long pass, and almost finally managed to score a goal. And then on there onwards in the second half, we finally saw that Odisha FC started changing a few things. The conventional style of FIFA they were playing, they realized that this is not working out. We need to do something else. So what they did was something, they took a page out of ATK Mohan Bagan's book, right? Now they started relying heavily on those German crosses and then those through passes. And as a result of which, finally, after trying tooth and nail, they managed to get those 2 goals in the dying last 10 minutes of the game. But anything apart from that, TT, what was your takeaway? आई थिंक इस गेम के अंदर मेनली जो आखिरी के कुछ मोमेंट्स थे एंड ओवरऑल फुल गेम की भी अगर बात किया जाए, मुझे देख के एक टाइम के लिए भी नहीं लगा था कि दोनों ही टीम्स पे ये कोऑप मैच चल रहा है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन था आई थिंक वो काफी अच्छा था एंड मिस पासेस उतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला इस गेम के अंदर शुरुआत से। बट जो बीच में से जो मौके नहीं बन रहे थे ओडिशा एफसी की तरफ से, जैसे कि आपने कहा कि आखिरी कुछ मोमेंट्स पे आई थिंक मुझे लगता है कि एटीके मोहन बगान की तरफ से थोड़ा बहुत वो कुशनी पोजीशन वो होता है ना कि बैक ऑफ द माइंड चलता है कि ठीक है ये गेम तो हम लोग निकाल लेंगे, जीत रहे हैं, लेकिन उसी जगह पे वो थोड़ा सा लूज हो गए और उनका डिफेंस लूज हो गया एंड उसका ही प्रॉपर फायदा उठाते हुए दिखे ओडिशा एफसी। बट आई थिंक जो कमबैक करके आता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बहुत ज्यादा रहता है, तो इस बार ओडिशा एफसी फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। बट एटीके मोहन बगान, उनको ये मैच को देख के खेलने की जरूरत रहने वाला है। Oh, of course. No doubt about that because, at this point, you got Nate coming in, finally making his debut in his individual matchup against Afnan. One of those players who went in, was top 4 last time in the eISL Season 1. Wonder kid, I must call him. And now let's see how much has he improved. Previously, he was a little bit nervy, but now he is looking to have settled in. Wow. What a composed goal, a beautiful through pass, then a little bit of a nudge there towards the end, and Pele, all he had to do was tap in at the back of the net, and Nate was literally left stranded on how on earth he could concede that one. Yeah, and ये पास क्या शानदार निकाला गया था, विजन बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिला अफनान की तरफ से एंड जिस तरीके से वो थ्रू बॉल खिलाए थे उसी से ही कहने की हम लोग कह सकते हैं कि 90% काम तो उधर ही खत्म हो गया था जब थ्रू बॉल पहुंच गया था एम्बापे के पास। अगर एम्बापे खुद भी शॉट लेते तो मे भी उधर से भी गोल हो जाता, बट एक बार फिर से मौका बनता हुआ रोनाल्डो, बॉल कंट्रोल उनके पास, हकीमी टू बेलिंगम एंड अफनान बहुत ही शानदार कंट्रोल में दिख रहे हैं एम्बापे। एंड जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर ही रहे थे पिछले गेम पे कि पहले से ज्यादा गोल नहीं दिखाए, बात करते ही करते पहला गोल भी आ चुका है। Look at that! Look at how promising Afnan has been playing. TT, he looks fearless. I mean, this is definitely a different version of Afnan. Let's call him Afnan 3.0 because there has been a 2.0 in the eISL Season 1. That second half phase that I was talking about, right? When Afnan started really just steamrolling through his opposition, and now he's just looking cutting sharp, and
the way he's been confident in his place, the way he's making those runs, he's gonna be happy about it. And of course, he's a little. The scars have not really faded off. What happened to them in the co-op game? ATK, Mohun, Bagan, and the fans, they kind of stunned. But now a little bit of a relief for them with them getting the lead so early inside this game. Yeah. But Odisha FC फर्स्ट गोल आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहम चुके हैं एंड आई थिंक थोड़ा अपना जो डिफरेंस है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि पहले गोल के लिए शायद वो रेडी नहीं थे कि उधर से कोई भी थ्रू पास आ जाएगा, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिसके थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इधर कोशिश था मेसी को खिलाने की लेकिन बीच में बेलिंगम की तरफ से एक इंटरसेप्शन हुआ एंड बॉल अभी जा चुका है एटीके मोहन बगान के कंट्रोल पे। अफनान की अगर बात की जाए तो हम लोगों को थ्रू बॉल्स काफ़ी शानदार एंड प्रॉपर पॉइंट ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। उसको छोड़ के भी उनका जो बॉल के ऊपर कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको पता है कि वो क्या करने वाले हैं, इसके बाद किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता था बट नहीं किया क्योंकि इधर सेम गलतियां हम लोग ओडिशा एफसी की तरफ से भी दिख रहे हैं। Yeah, I think Nate really needs to find his focus and composure back because especially, in just the first few plays of the game, if you concede a goal, you really need to, calm yourself down. Maybe even if required, just take a pause, just contemplate what happened and how he could get that through pass. But what a beautiful play coming in there from Afnan. And again, he's trying to build up something similar. Wanted to go for a little bit of a back pass, but has been stolen away. And Nate is back on his attack. Yeah, as of now, मौका फिर से बनता हुआ तो दिख रहा है बट ओडिशा एफसी जितने बार मौका वो बना रहे हैं उतने बार लाइक का कन्वर्जन रेट या फिर शॉट ऑन टारगेट हम लोग को नहीं दिखा है। शॉट्स बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिला है शुरुआती 30 मिनट के अंदर। बट एटीके मोहन बगान की तरफ से अफनान मेनली उनका गेम बहुत ज़्यादा बेहतरीन। इसके पहले भी अगर देखा जाए विकी भी बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस परफॉर्मेंस देखे गए। तो इस बार जो टीम है कि मोहन बगान के पास आई थिंक इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इधर आता हुआ, लेकिन बीच में जो मैच हम लोग को देखने के लिए मिला ओडिशा एफसी उनके पास कमबैक करने का वो एक पोटेंशियल है। सो वो चीज़ हम लोग को एक बार फिर से दिख सकता है। शुरुआती कुछ ही टाइम हुआ है, अभी बहुत टाइम बाकी है। Wow! कर रहे थे नो वे, ये नहीं करना था मिस। Will be kicking himself in the foot, but I really liked how Afnan got a Hakimi in there, and this was a golden opportunity undoubtedly for Nate TT, and must be definitely cursing himself for missing that one. And now Afnan trying to find a pass on towards R9, that was not let happen. But for now, I think both these players kind of are having that little bit of a similar style of play where they're just looking out for gaps, looking out for openings, for opportunities to maybe try and capitalize. And now let's see what can be done from over here. Virgil van Dijk, Afnan looking for options, decided to go through that right hand side with Hakimi. Or maybe not. Maybe. बट एटीके मोहन बगान इस गेम के अंदर भी शुरुआत से ही प्रॉपर कंट्रोल में दिख रहे हैं, कोई भी ज़्यादा टेंशन उनके लिए है नहीं। ऑब्वियसली टेंशन इन टर्म्स ऑफ अगर बात किया जाए मैच जीतने की वो तो है, बट जिस तरीके से 1-0 लीड पे अभी अफनान एंड प्रॉपर कंट्रोल में दिख रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं खेल रहे, लेकिन प्रेशर अभी फुल्ली बन चुका है ओडिशा एफसी के ऊपर। बट ओडिशा एफसी उनको जो अभी हाफ टाइम के बाद किस तरीके से वो वापस आएंगे वो देखना होगा, क्योंकि जो आपको बीच में बफर मिलता है उस टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ सोचने का मौका मिलता है एंड उनको स्टैट्स भी देखने का मौका मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं पोजीशनिंग, फिर डिफेंडिंग, कौन से पोजीशन से ज़्यादा बॉल लूज किए है एंड शॉट, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि ओडिशा एफसी उनको शॉट लेने का मौका ही नहीं मिला, मिला भी है तो शॉट ऑन टारगेट एक भी नहीं है। तो ये चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पोजीशनिंग की बात किया जाए
तो इधर कहीं ना कहीं जो है डिफेंसिव एरिया राइट साइड के ऊपर ज्यादा खेलते हुए दिखे हैं एटीके मोहन बगान। ऑन द अदर हैंड हम लोग को लेफ्ट टू मिड टू होके हुए एकदम राइट कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर राइट बैक को उतना ज्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। सो ये जो चीजें हैं ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड लेट्स से उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे गेम के ऊपर। बट ओडिशा एफसी उनको चाहिए कि वो इधर से एक गोल एटलीस्ट करके जाए अगर उनको ड्रॉ करना है। Yeah, I think that is going to be really instrumental for them. They have to ensure that they score one in. But for now, oh, with the beginning of the second half, Nate has to figure a way out. At this point, oh, beautiful defense, just blocking that attacking run, or rather the pass. In that situation, again a through delivered. He had those passing options. What? I thought he would pass it on towards Messi because there was no defender there and he could have just run in through. But that did not happen. या आई थिंक यही कुछ मोमेंट्स है वो आपको गेम के अंदर या तो कुछ ब्रिलियंट करके जाते हैं या फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। एंड आई थिंक इधर पास की ज़रूरत था, जैसे कि आपने कहा। मैं भी सोचा था शायद उनको पास देंगे बट नहीं दिया गया। तो एटीके मोहन बगान अभी भी एक गोल के लीड पे मौजूद है। थियो हर्नांडिस लेफ्ट बैक से धीरे धीरे करके पुश करते हुए हाई लाइन के साथ अभी के लिए खेलती हुई एटीके मोहन बगान। एंड उनका जो डिफेंस लाइन है वो भी पहुंच चुका है मिडफील्ड के आसपास। बेलिंगम को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। हकीमी रन उतना निकाल नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी मेसी मौजूद है। सो विथ मेसी, अगर आपके पास मेसी है राइट विंग के ऊपर तो आप हकीमी को थोड़ा रेस्ट दे सकते हो, पीछे रख सकते हो सिर्फ और सिर्फ डिफेंडिंग के लिए। बट इस बार अकेला मेसी प्रॉपर कंट्रोल के साथ बढ़ते हुए फ्रॉम द साइड ऑफ ओडिशा, लेकिन वर्जिल वैन डाइक इधर फिर से मौजूद। एंड वो कहीं ना कहीं वॉल है एटीके मोहन बगान की तरफ से। एंड वो किसी को भी अपने वॉल के थ्रू आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। Oh, now this seems like a promising chance where Messi wanted to go in but just pushed off by Nate over there. Virgil van Dijk clearly can see how much that man could make a difference. And of course, Messi not the best in winning those 1v1 situations against BVD. But right now, Odisha FC, they've been looking good. They've been looking better than how they were playing in that first half. But right now, at this point, they need to find a way through. I mean, had given us a heart attack in the previous co-op game, but now Afnan again back on his attack, trying to figure out that opening, but resorts to a back pass on towards Hakimi. Oh, this could be a beautiful one being made towards Pele. Rude still receiving it, a pass too many, and now the attack has been volleyed, and the counter attack for Odisha FC has begun with Mbappe making that beautiful run, but eventually having no other passing options, will try to take things on his own legs. But there you go, something just went a little off. And well, ladies and gentlemen, we will be right back. There's some small technical difficulties nonetheless, but to be honest, it kind of was shocking to see, because there was one of that golden opportunity that was created by Nate. When he could have easily passed on towards Messi, or maybe even given towards Mbappe. He had both the options open, and still did not go for that. And well, I think now he's got some time to contemplate on what has really happened. So let's hope he fixes that. या बट वैसे मौके बार बार नहीं आते, सो आपको कन्वर्ट करना होता है और वो उस जगह पे नहीं कर पाते। सो ये चीज़ का भुगतान शायद उनको भुगतना पड़ सकता है इसके बाद, क्योंकि अगर वो ये मैच को हार जाते हैं एंड स्कोर लाइन सेम रहता है 1-0, तो इधर पॉइंट जो है वो एटीके मोहन बगान लेके जाएंगे। ऑन द अदर हैंड कोई भी पॉइंट इधर ओडिशा एफसी को नहीं मिलने वाला। हालांकि वो सेकंड मैच जीते ज़रूर थे, फिर भी ये एक सीरीज है 3 मैच का, जिसमें से जो 2 मैचेस जीत जाएंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर ड्रॉ करते हैं, एक गोल अगर आ जाता है ओडिशा एफसी की तरफ से, देन इट विल बी ड्रॉ, और अगर 2 आ जाता है फिर तो ओडिशा एफसी जीत के जाएंगे। पिछले मैच में करके दिखाए थे, इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, बट आई थिंक जिस तरीके से इस गेम के अंदर अभी तक परफॉर्मेंस आया है, हर टाइम मिरेकल नहीं होता, वो मिरेकल कुछ कुछ मैचेस में ही होता है। तो इस पे तो बहुत टफ लग रहा है लेकिन इधर से कमबैक ओडिशा एफसी के लिए।
Yeah, I think I mean, it is tough. It is tough, but it's doable for Odisha FC because now they've been looking a Yeah. little bit more sound, especially after conceding that first goal. I was really, really not expecting that that would be such a beautiful one coming out of Afnan right from the start. Neither did Nate, right? Nobody expected that Afnan would strike so early. And after that, Nate got back into his senses. He hasn't been giving a lot of those openings. Afnan, he's been trying to cut through most of the times from those wings. Has been trying a lot of variations of attacks. But I think I felt that Nate was really steady and sturdy rather on his defense, not letting any more goals pass. But yes, the big question over here, ladies and gentlemen, is can Nate strike back? Because if Afnan continues with that, and if it's just that 1-0 scoreline, then ATK Mohun Bagan, they will be ending up with 3 points. Odisha FC, especially after their heroics in that co-op game, that in the span of 10 minutes securing those 2 goals, and still if unable to clinch no points tonight, they're gonna be not so happy about it, TT. बिल्कुल, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगे क्योंकि शुरुआत है ये आईएसएल सीज़न 2 का एंड शुरुआती गेम पे अगर आप हार जाते हो, जिधर आपके पास मौका रहता है जीतने का, उसके बाद भी अगर आप हार जाते हो, तो उस पे थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता ही है। एंड बट अभी भी बहुत टूर्नामेंट बहुत लंबा है, सो हर एक टीम को बहुत सारे मौके मिलेंगे। बट वही होता है कि अगर आपके पास चांसेस देन व्हाई नॉट टू कन्वर्ट इट टू द गोल। सो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो बन जाता है। बट वही सेम जगह पे अगर हम लोग देखें तो इस गेम के अंदर मेनली फीफा 23 के अंदर कुछ 4 मोमेंट जो बहुत ही ज़्यादा डाइसी होता है हर एक प्लेयर के लिए, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या फिर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाता है, वो है एक तो गेम के शुरुआती 10 मिनट, उसके बाद 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स जो कि हम लोग को फर्स्ट हाफ के एंडिंग में देखने के लिए मिलता है। या तो शुरुआत में गोल दाग दो, उसके बाद उस टाइम पे जो है प्लेयर को सेटल होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है एंड हाफ Right. टाइम के जस्ट पहले उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही नर्वस लगता है क्योंकि अगर आखिरी मोमेंट पे कोई गोल्स कंसीड कर लेते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही कंसर्न हो जाते हैं प्लेयर जिसके थ्रू थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, जो कि उस टाइम पे कुछ गलतियाँ करवा देते हैं उनसे एंड आई थिंक उसी पे ही कैपिटलाइज करते हुए दिखे थे एटीके मोहन बगान शुरुआती 10 मिनट के अंदर जो थ्रू बॉल खिलाया गया था मेनली टुवर्ड्स एम्बापे, वो उस जगह पे वो जो थ्रू बॉल उनको मिल गया था, वो जो रिसीव हो गया था, आई थिंक उधर ही 90% काम हो गया एंड उसके Yeah. बाद जस्ट सिर्फ एक पास की जरूरत था एंड अगर नहीं भी करता आई थिंक उसके बाद भी शायद गोल हो सकता था अगर एम्बापे डायरेक्ट शॉट लेता। Yeah, I think no second thoughts about what you just said. I completely agree with you. And yeah, even we've both been playing FIFA 23 for quite a long time, and we know that 1 goal lead is nothing really. No, it's just that one small mistake, even in the extra time, or even while the stoppage time is going on, and that Yeah. happened to me yesterday while I was playing twice. Right, I was leading 1 goal up, and suddenly at the 90th minute mark I concede one, and then it was a draw. And this has happened to a lot of FIFA players anytime, and most of the time that they've gone on to play the game. And this really goes out to haunt them, unless and until you score 3 goals. Even a 2 goal advantage comes down to nothing. We just witnessed that in the previous co-op game. So ensure that you have got 3, so that you've got that little bit of a cushion for yourself, that yeah, now we can play the way we want, we can try a few more things. And for now, I mean, at this point, all we're doing is just waiting for the result, because of course, technology has been so advanced right now in these worlds, and certainly it is technology at the end of the day which has a few flaws, and for which we sincerely apologize to our viewers. But do not worry, we are here, we will update the results, which will be there in a short while. But today has been such an amazing day so far. If we talk about the nutshell, the first matchup where we got to see FC Goa against Kerala Blasters FC, and Vanshad Sharma being in such a scintillating form, that was so nice to just watch. बिल्कुल एंड उसके बाद जिस तरीके से हम लोगों को लाइक एक ट्रांजेक्शन देखा, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज था एंड उसी ओ फाइनली
फाइनली इधर आता हुआ रिजल्ट एंड अफनान ने एक और गोल स्कोर किया था. सो इट्स एंड अप विथ 2-0 एंड एटीके मोहन बगान फैंस अभी बहुत ज्यादा खुश होंगे इस स्कोर कार्ड को देख के. एंड एज अ अवे गेम अवे टीम ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट विन था जो कि लेके गए. एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नो डाउट इधर विकी होने वाले. 5 गोल्स इतना इजी नहीं है करना. Yeah, absolutely. And yeah, I think that's a controversial matchup, right? At least for Vakya, he's not going to be pleased about it. And I know, I've been in those situations also, and a little bit of a that was a pen. It was a clear pen. It was a yellow card offense pen, but definitely not a red card. But Vicky, what an amazing player he is. Missed out on the last season's eISL. This time, what a way has he started off his season. Such an amazing player to watch and making his presence felt. And ATK Mohun Bagan fans are going to be rejuvenated, rejoicing at this moment because they are off to a winning start. The duo has been looking really good. Little bit of that hiccup in that co-op game which could have been avoided, and this could have been a clean victory for ATK Mohan Bagan. But regardless, that being said, ladies and gentlemen, we are finally done with the second matchup of the evening. But hold on, we still have one more, but coming after this short little break.